गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले हैं 2 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं 2006 से एमबीए बीबीए पढ़ा रहा हूँ। 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। जो मेरा क्लासेस हो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे मेरा क्लासेस आप लोग को मिलेगा। साथ के साथ देखो आपको क्लासेस दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स, अगर एमबीए करना है तो आप लोग कैट की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में IIM अहमदाबाद के लिए आप जाते हैं। तो वहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं वहां पे। तो ये हर साल के IIM अहमदाबाद के पोस्टर्स दिखाई देंगे आपको। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज में एज अ गेस्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं 2006 में पढ़ाना शुरू किया था। 2008 से मैंने बुक लिखना शुरू कर दिया आपके प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। 2010 में इंटरनेशनल का बुक लिखा था। फाइनेंशियल डेरिवेटिव 2011 में लिखा था। तो ऐसे बहुत सारा बुक्स लिखा हुआ है मेरा। ये मेरी एमबीए की क्लासेस हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग को मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ सेम तक सारा मिलेगा। ऐसे आपको बीबीए का सारा क्लासेस मिलेगा फर्स्ट सेम से लेके, और आपको 6 सेमेस्टर तक सारी क्लासेस मिलने वाली है। इसमें आपको फाइनेंस, अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, उसके अलावा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, सबकी क्लासेस आपको कंप्लीट मिलेगी। और उसके अलावा हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं। बहुत पतले पतले नोट्स होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं। आप लोग अपना सिलेबस भेजोगे, कस्टमाइज नोट्स विद इंडियन एग्जांपल। ऐसी इजी लैंग्वेज होती है कि सामने वाला पढ़ते ही फटाफट उसको समझ में आता है। तो नोट्स वगैरह भी आपके मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, बुक्स, डेमो सब मिलेगा मेरे पास में। तो आप लोग को अगर कुछ भी चाहिए, मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करो या व्हाट्सअप करो। डेमो वीडियोस में भेज दूंगा, डेमो नोट्स भेज दूंगा। कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर मेरे को कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। We'll start the class. See, basically we are starting with the accounting class. See, there are so many students of which are related to 11th class. They have done this accounts in the 11th class. आप लोगों ने 11th में accounts पढ़ा था, but now we are starting with the basic part. बहुत डिटेल में जाएंगे and we'll complete all the things in a detail. Okay, now see. See, first of all, we'll starting with the accounts part. And जिसका mic on है, please off कर दो. If there is a background noise, if there is any background noise, off the mic. Okay, now see. Introduction of accounting दिखाई दे रहा है. See, there is very interesting point in this introduction of accounting. There is accounting cycle. What is this accounting cycle? Any idea to anybody? And I will explain this thing in a detail. What is this accounting cycle? क्या कहता है ये? What is this accounting cycle? मिला आप लोग को? See, first of all, if you are doing any business, there is a first thing, that is what a transaction. What is transaction? Any idea about transaction? You are purchasing something, कुछ आप खरीद रहे हो. You are selling something, कुछ आप बेच रहे हो. तो if you are doing any business, there is a transaction. लेन देन होगा नहीं होगा? So whatever the transaction you are doing, जो भी transactions आप करोगे, you need to record those transaction in a book. अब वो सारा का सारा transaction एक book में क्या करेंगे? Record करेंगे. And that book is known as journal. You got the point? If you are selling something, if you are purchasing something, you have to write in a book. एक book के अंदर आप लिखेंगे, and that book is known as a journal. Journal is a rough book in which you are putting all the transaction. जितना भी transaction होगा, सारा का सारा transaction किस में डालेंगे आप? journal में डालेंगे. After preparation of journal, we need to prepare the ledger. What is ledger? Any idea about ledger? What is ledger? What is ledger? See, any idea about ledger? क्या होता है बताओ? माइक ऑन करो, टू वे कम्युनिकेशन होगा, ज्यादा मजा आएगा. सी, इन केस ऑफ लेजर, सी व्हाटएवर यू हैव डन विद द हेल्प ऑफ जनरल, वी नीड टू सेग्रीगेट द डेटा. सेग्रीगेशन मींस लाइक देयर इज वन पर्सन, एक पर्सन है राम, ही परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट. उसने उधार पे माल खरीदा. यू गॉट द पॉइंट ना? व्हाट इज क्रेडिट? तो ही हैज परचेज द गुड्स ऑन 1st August. हाउ मच? दैट इज 10,000. ही परचेज द गुड्स ऑन 1st August of 10,000. Again he come on 10th August, he purchase again the goods on credit of 20,000. Again he come on 11th August, again he purchase the goods of 30,000. So in a whole month, how much he purchase? मतलब राम ने पूरे के पूरे महीने में how much goods he purchase, कितना goods उसने purchase किया, उसको अगर segregate करेंगे, राम का डेटा अलग कर देंगे, श्याम का डेटा अलग करेंगे, मोहन का डेटा अलग करेंगे, and that become a ledger. Ledger means segregation of data. Whatever the rough book you have prepared, जो भी rough book आपने बनाया है, उस rough book को जब segregate करेंगे तो it become ledger. At the end of the accounting year, बताओ इंडिया में accounting year कब end होता है? When the 31st March.
तो 31st मार्च को will prepare the trial balance. Trial balance means the summary of the ledger. Ledger का जो पूरा summary होगा, it become trial balance. And it will prepare on 31st March in case of India, but out of India that is prepared on 31st December. Accounting year India के बाहर 31st December को end होता है, but in India we are ending the accounting year on 31st March. And then we'll prepare the trading account, profit and loss account, balance sheet. What is this? What is trading account, profit and loss account, balance sheet? क्या होता है बताओ? Any idea about trading profit and loss account, balance sheet? See, in case of trading profit and loss account, balance sheet is what? This will help you to find out the final profit and loss of the business. अगर आप किसी business को करते हैं तो at the end of the particular year आपको ये पता होना चाहिए that how much profit and how much loss I am getting. तो profit and loss को पता करना है, balance sheet financial position पता करना है, तो you need to use this particular trading P&L balance sheet. It will prepare on 31st March in India and 31st December for each and every country except India. Okay, we'll start with this thing in a detail, so we'll get an idea. Okay, देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही मैं सारा का सारा करवा दूंगा आपको. We'll start with the basic part. अगर आपको basic आएगा, how many are from non-commerce background? Just a minute, 2 मिनट और लूंगा. Anybody who is from non-commerce background? Which one? Name बोलो अपना. Ayush. Okay. Ayush from non-commerce. Okay. Anybody else who is from non-commerce background? Come to meeting from non-commerce background. Which one? Oh, what's your name? That's the name. Siddhi. Siddhi, you are from non-commerce background. Okay. दिवांशु क्या background है आपका? B.Tech? Yes, sir. Okay, non-commerce background. ठीक है. See, the thing is that if the students is from non-commerce background ना पढ़ाने में मजा आता है. If the students is from commerce background, he knows each and everything. Basic part उसको पता होता है. Okay. See, basically we are starting a business. दिवांशु, सिद्धि, आयुष क्या करने वाले हैं? We are starting a business. एक business start करने वाले हैं अपन. And very small business, not a big business we are starting. And what we are deciding a business of ready-made garment. एक business में start करने वाला हूँ जिसमें ready-made garment, shirts बेचूंगा, trouser बेचूंगा. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Even ladies और gents के clothes में बेचने वाला हूँ. ये मेरा business start होने वाला है. So when you will prepare a business, अगर आपका एक business start होगा तो we need to prepare a balance sheet. अगर business start होगा तो business का क्या बनेगा? Balance sheet बनेगा. अब ये balance sheet क्या होता है? What is this balance sheet? Balance sheet is nothing but the financial statement of the business. एक business आप करेंगे ना तो business का पूरा हाल बताएगा balance sheet कि कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, कितनी संपत्ति है, whatever the assets you are having, सब बताएगा. Balance sheet is divided in two parts. One that is liability side और दूसरा क्या होगा? बोलो बोलो. Asset side होगा. Balance sheet को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. One that is liability, another is asset. Yes, yes, yes. कुछ बोला आपने? बताएं. Amount. Okay, now see. If you want to start this balance sheet, क्या है ये? कैसे वर्क करता है? बताओ. मेरा बिजनेस क्या है? What is my business? क्या करने वाला हूं बताओ? We need to start a ready-made garment business. तो अगर रेडीमेड गारमेंट बिजनेस को स्टार्ट करना है, छोड़ो इस बैलेंस शीट को, लीव दिस बैलेंस शीट. आप बताओ सबसे पहले क्या चाहिए? बोलो. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट यू नीड फर्स्ट? सबसे पहली चीज बोलो, क्या चाहिए आपको? व्हाट यू नीड? Sir, capital. Capital. Funds. And what is my target? My target is 50 lakh. If you want to start this business, you need 50 lakh rupees to start the business. अब ये 50 lakh rupees कहां से आएगा? From where you get this 50 lakh rupees? See, you are having 20 lakh rupees in your pocket. 20 lakh rupees आपके पॉकेट में है. So 20 lakh तो it's what? Owner's fund. Owner fund. You are having 20 lakh rupees in your pocket. But क्या is it possible to start the business with 20 lakh? How much you need? कितना चाहिए बोलो? 50 lakh rupees चाहिए. So how much remaining? कितना remaining है बोलो? How much money is remaining? कितना remaining money है बताओ? 30 lakh. So what I will do? 30 lakh rupees I have taken a loan from bank loan. You got the point? So if you want to start this business, you need 50 lakh rupees. 20 lakh you are having of your own. 20 lakh आपके पास में है. And you have taken a loan of 30 lakh rupees. 30 lakh का आपने क्या लिया? लोन लिया. Now see, there are two things. One that is owner. Second one is business.
क्या ओनर और बिजनेस एक होता है? बोलो। ओनर एंड बिजनेस इज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी. ओनर इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट. ओनर एंड बिजनेस इज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी. यू गॉट द पॉइंट? लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है, यू आर हैविंग अ रेडीमेड गारमेंट बिजनेस. आपको 2 शर्ट पसंद आ गई, आपने 2 शर्ट लेके घर आ गए, अलाउ नहीं है, बिजनेस अलाउ नहीं करेगा आपको, यू हैव टू पे फॉर दैट. अगर ओनर भी है तो ओनर को भी वहां पे करना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन कम टू दैट बिजनेस. मतलब वो बिजनेस में से कुछ भी निकालता है तो दैट ओनर नीड टू पे फॉर दैट. ओनर अगर पे नहीं करेगा तो बिजनेस तो नहीं रह सकता. यू गॉट द पॉइंट नाउ? नाउ सी, अब देखिए स्टार्ट करते हैं. सी दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कहां से आया? Owner is having 20 lakh rupees and 30 lakh rupees taking loan. So 50 lakh rupees आया. So कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहा है पैसा? Who will pay this money to whom? किसको दे रहा है ये? This balance sheet is for what? किसके लिए बनेगी ये? बिजनेस के लिए. You are preparing this balance sheet for the business and the owner is giving this money to business. Owner क्या कर रहा है? ये पैसा किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है. Now what is liability? बताओ. What is liability? बताओ. Any idea about liability? क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं दायित्व. क्या होगा? नाउ इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि ये पैसा वापस किसको पे करना है. बिजनेस किसको पे करेगा? ये मनी बताओ किसको पे करेगा? ओनर. सो इट्स अ लाइबिलिटी साइड विल राइट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल. एंड कैपिटल इज हाउ मच? 20 लाख. व्हाट इज दिस कैपिटल? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है. द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. एंड दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी. आज आप किसी से उधार लोगे तो क्या बोलोगे? सर इट्स माय लाइबिलिटी, माय रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल पे दिस मनी टू यू इन फ्यूचर. मैं दूंगा आपको वापस. दूसरा कहां से आया पैसा? बोलो. बैंक लोन. हाउ मच? कितना है? बोलो. 50 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज ना. तो बैंक लोन से आपने कितना लिया? 30 लाख. टोटल अमाउंट इज हाउ मच? कितना हो गया? बोलो. 50 lakh rupees. Now see the business, the responsibility of business to pay 30 lakh to the bank. It's a liability of the business. Business का liability है कि 30 lakh rupees किसको देना है? बैंक को देना है. और 20 lakh rupees किसको पे करेगा? बोलो. वो ओनर को पे करेगा. एंड दिस इज व्हाट अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब द मनी विच यू हैव टेकन फ्रॉम समबडी, यू हैव टू पे दैट मनी बैक. जो भी पैसा आपने लिया है उस पैसे को आपको वापस क्या करना है? पे बैक करना है. नाउ विल स्टार्ट विद द एसेट साइड. सी हाउ मच मनी यू हैव गॉट. कितना पैसा इकट्ठा हो गया? बताओ. 50 लाख रुपीज. अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है. व्हाट इज माय बिजनेस? रेडीमेड गारमेंट्स. रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है. सबसे पहले क्या चाहिए? इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सबसे पहले क्या चाहिए? बोलो. स्पेस चाहिए. उस स्पेस को आप बोलोगे शॉप. एक शॉप होगा, उसको मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग. क्या बोला उस वर्ड को? मैंने बोलो लैंड एंड बिल्डिंग. तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. एंड आई डोंट वांट टू टेक ऑन रेंट, आई वांट टू परचेज दैट लैंड एंड बिल्डिंग. क्या करना है मेरे को? परचेज करना है. तो अगर मैं परचेज करूंगा तो मैंने 30 लाख रुपीज का लैंड बिल्डिंग परचेज किया. 6 o'clock बात करता हूं मैं क्लास फ्री करके ना, 6 बजे. हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का परचेज किया मैंने? 30 लाख का. हो गया? क्या मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया? व्हाट आई नीड. अब क्या चाहिए? बोलो. ठीक है, फर्नीचर. बिल्कुल सही है. इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट, वो शॉप है, उसमें फर्नीचर डालोगी. यू हैव अ फर्नीचर ऑफ 10 लाख रुपीज. 10 लाख का आपने फर्नीचर डाल दिया उसमें. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? बोलो. क्या चाहिए आपको? स्टाफ चाहिए. तो स्टाफ को पैसा थोड़ी देना है. स्टाफ को तो तब देंगे जब उसका 1 मंथ पूरा होगा सैलरी. स्टॉक. ओके ओके, यू आर सेइंग स्टॉक. स्टॉक स्टॉक बिल्कुल सही है. नाउ यू नीड स्टॉक. अब स्टॉक लेके आए 5 लाख रुपीज का. आप रेडीमेड गारमेंट्स का जो स्टॉक लेके आए, कितने का लेके आए? 5 लाख का स्टॉक लेके आए. बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है आपका, तो थोड़ा वो बंद कर लो. ओके, स्टॉक हो गया 5 लाख का. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कैश एंड बैंक बैलेंस. 5 लाख रुपीज आपके पास में कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है. क्यों रखा आपने? बिकॉज एम्प्लॉइज को पेमेंट करना है. आपको हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर सप्लाई का बिल देना है. तो यू नीड टू हैव सम मनी फॉर द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन के लिए पैसा चाहिए. टोटल अमाउंट कितना हो गया? बोलो. हाउ मच? 50 लाख. तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसके लिए 50 लाख रुपीज चाहिए थे, और 50 लाख को कैसे बाइफरकेट किया? क्या लाए, क्या नहीं लाए? एंड दिस इज व्हाट अ बैलेंस शीट. दोज हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड,
कुछ क्लियर हुआ? बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बैलेंस शीट तो बनेगा। अगर बैलेंस शीट नहीं बनेगा तो बिजनेस रन ही नहीं कर सकता। यू गॉट द पॉइंट? कैसा भी बिजनेस हो, बैलेंस शीट होगा ही होगा, एंड दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हुआ कुछ? आया समझ में? नाउ सी this current asset is divided into two parts, one that is fixed asset, another one is current asset. Assets is divided in two parts, one that is what, bolo fixed asset, second one is current asset. What is fixed asset? Fixed asset are those assets which are used in the business. Fixed assets वो होंगे, see बिल्कुल सही है, Tapash is saying right, assets and furniture. See basically fixed assets are those assets which we are using in the business but we are not selling those fixed assets. You got the point? अगर मैं current asset का बात करूंगा, current assets are those assets which are converted into cash within 1 year. Like we'll take an example, land and building. आपने जब land and building को परचेज किया था 30 लाख का, what is your vision? क्या विजन था? क्या सोच रहे थे आप? बोलो. When you have purchased a land and building, when you have purchased that particular shop, आपने क्या परचेज किया? शॉप. तो what is your vision? क्या विजन था? क्या सोच रहे थे आप? बोलो. माइंड में क्या चल रहा था आपके? बताओ. व्हाट यू आर थिंकिंग? दैट आई विल यूज दिस लैंड. हाँ, शॉप खोलेंगे. क्या सोच क्या थी आपकी? लॉन्ग टर्म, 10 years, 20 years, 50 years और लाइफ टाइम. यू गॉट द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज दिस? इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लाइफ टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग दिस मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, दैट इज व्हाट फिक्स एसेट. द इन्वेस्टमेंट विच इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल सही है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द फिक्स्ड एसेट. डन. व्हाट अबाउट फर्नीचर? क्या था फर्नीचर? जब आपने शॉप में 10 लाख का फर्नीचर खरीदा था, क्या सोचा था आपने? बताओ. व्हाट इज योर विजन व्हेन यू आर परचेजिंग द फर्नीचर? बोलो. जब आपने, हाँ, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म. लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि विद इन 3-4 months और विद इन 1 year आई विल चेंज द फर्नीचर. इट विल फॉर 5 years, 10 years. सो दिस इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज दिस? फिक्स्ड एसेट. Why fixed asset? Because we are using that furniture for long term. I have started my classes in 2006. मेरे पास जो फर्नीचर है ना 2006 का पड़ा है, मैंने सेल नहीं किया उसको. Why? Because furniture is for long term period. Okay. What about stock? Stock बताओ. What about stock? क्या होगा stock? बोलो. Current asset. See, पता है जब मॉर्निंग में आप स्टॉक लेके आते हो ना, तो सुबह सुबह ना भगवान के वहां क्या करते हो? बोलो. अगरबत्ती करते हो और हाथ पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, तो हाथ जोड़ते हुए क्या बोलते हो आप भगवान को कि आज क्या हो, क्या होना चाहिए? बोलो. अच्छा वो हमारे साथ. नहीं, अच्छा मतलब क्या आप ये सोचते हो भगवान आज कस्टमर इतने सारे आने चाहिए कि जो मेरा 5 लाख का स्टॉक है वो क्या हो? बोलो बोलो. सेम डे में सेल हो जाए. सो दिस इज व्हाट अ करंट एसेट. करंट एसेट इज दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year. एक साल के अंदर मैं इसको सारा का सारा क्या करूंगा? बेच के बाहर निकाल दूंगा. यू गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट वन इज व्हाट? कैश एंड बैंक बैलेंस. अब भाई कैश और बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी आपके हाथ में कैश है, तो दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको? कैश ऑलरेडी है तो क्या हो गया? व्हाट इज दिस? करंट एसेट. यू गॉट द पॉइंट? दैट इज व्हाट अ करंट एसेट. क्लियर हुआ? नाउ see there is a liability and that liability is known as fixed liability. What is fixed liability? Any idea? See, leave this topic. We'll take a home loan. If you have taken a home loan, so in how many time period you will pay that home loan? You have taken a home loan 20 years. of around 20 lakh rupees. तो कितना टाइम लोगे पे करने में उसको? 10 years, 20 years, 30 years. So this is what a fixed liability. Fixed liability वो है जो मैं पे करूंगा. I will pay the fixed liability, but it will take more than 1 year. Liability means I have to pay whatever the money I have taken from somebody. I need to pay that money. That is what a liability. And if you are paying that money within 1 year, it becomes current liability. And if you are paying that money more than 1 year, it becomes what? क्या बोलेंगे इसको? बोलो. Fixed liability. Fixed liability will be pay more than 1 year. It will take more than 1 year to repay the fixed liability. But in case of current liability, we need to pay that money within 1 year. अगर एक साल में मैंने पैसा चुका दिया तो वो करंट लायबिलिटी है, और अगर एक साल से ज्यादा लगने वाला है फिक्स लायबिलिटी. आई हैव टेकन अ बैंक लोन, तो मैंने क्या बोला था बैंक को कि मैं 2 महीने में पैसा लेके आ रहा हूं. When I have taken a bank loan, तो क्या मैं 2 months में पैसा वापस लेके आऊंगा? क्या बोलो? Is it possible to recover the money within 2 months? कौन सा लायबिलिटी है?
Which liability is this? Fixed liability. अगर मैं कैपिटल का बात करता हूं, कैपिटल इज दैट मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. वो बिजनेस में रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा, ये पैसा निकाल नहीं सकते आप. एंड दिस इज व्हाट? फिक्स्ड लायबिलिटी. यू गॉट द पॉइंट? कुछ क्लियर हुआ? ओके, सम टॉपिक्स आर क्लियर ना? कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Okay, now we'll discuss the format of balance sheet, so you'll get an idea. एक बेसिक आइडिया आप लोग को लगेगा जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का. एंड देन विल कंटिन्यू विद द क्लास. सी दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. जस्ट अ मिनट. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है आप लोग को? मिला सबको? स्टार्ट करें. Okay, now see, there are two words which are written in the asset side. This is your asset side, and the first word is what? Current asset, and the second word is fixed asset. मिला आप लोग को? दिखा आप लोग को fixed asset, current asset? So first of all, we'll start with the fixed asset. This is a basic format of balance sheet, and this is a basic terminology which the student need to know. अब जब स्टूडेंट को सारा टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा तो वर्कआउट करेगा. What's the first word? What's the first word? बोलो क्या है फर्स्ट वर्ड? बोलो फर्नीचर. क्या होता है फर्नीचर? बोलो. इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट. क्या होगा ये? लॉन्ग टर्म. तो इट इज अ फिक्स्ड एसेट. व्हाट अबाउट लूज टूल? लूज टूल क्या होता है बताओ? एनी आइडिया अबाउट लूज टूल? आप लोग कार परचेज करते हो, कार में बैक साइड में जैक आता है. जैक पता है आप लोग क्या करते हैं? जैसे ही जैक आता है कार में से निकाल के OLX पे फोटो खींच के सेल कर देते हो. इज इट पॉसिबल टू सेल दैट जैक? बताओ. जब तक आपका कार रहेगा तब तक जैक रहेगा. क्या है ये? विच इज व्हाट? फिक्स्ड एसेट. कार इज व्हाट? लॉन्ग टर्म एसेट. तो लूज टूल मींस अ पार्ट ऑफ दैट कार. मोटर व्हीकल इज व्हाट? कार, बसेस. दिस इज व्हाट? अ फिक्स्ड एसेट. प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट. ओके, व्हाट अबाउट पेटेंट एंड गुडविल? एनी आइडिया अबाउट पेटेंट एंड गुडविल? क्या होता है बताओ? व्हाट इज पेटेंट? इंटेंजिबल एसेट्स. हाँ, पेटेंट इज अ इंटेंजिबल एसेट. बिल्कुल सही है. एनी एग्जांपल ऑफ पेटेंट? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. एग्जांपल बताओ. हाँ सुरजीत बाहर जाके. एनी एग्जांपल फॉर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट? उसको फोन में आवाज आ रहा है ना बाहर. फोन को अगर आवाज करेगा तो, अगर आवाज नहीं करेगा तो ठीक है. हाँ बोलो. लाइक जैसे सर कोई बिजनेस स्टार्ट किया मैंने किसी चीज का, ओके. तो मैं अपनी तरफ से प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसको मैंने रजिस्टर करवा लिया. ओके, व्हाट आई हैव डन, आई हैव रजिस्टर्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लिया तो मेरा पेटेंट हो जाएगा. सी वी विल टेक एन एग्जांपल. नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज गुडविल. नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस इज व्हाट? गुडविल. ओके, पेटेंट का एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को. एवरीबॉडी नोज अबाउट बाबा जी. जानते हो बाबा जी को? कौन? किसकी बात कर रहा हूं मैं? रामदेव बाबा, पतंजलि. ठीक है, दैट इज बाबा जी. बाबा जी है बहुत बड़े, पता है. अब बताओ क्या कर रहे हैं? आपने देखा है बाबा जी टॉयलेट सोप बना रहे हैं. आप समझो, बाबा जी क्रीम बना रहे हैं. यू गॉट द पॉइंट? तो क्या बाबा जी ने वहां पर हरिद्वार के अंदर फैक्ट्री लगा रखी है क्रीम बनाने की? क्या बाबा जी ने आटा बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है? बताओ भाई, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं मैं. ही इज अ पर्सन हु इज टोटली अ बिजनेसमैन, नॉट बाबा जी. ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है. पता है क्या कर रहे हैं? लाइक मेरे पास में आटा बनाने की फैक्ट्री है. मैं बाबा जी के पास गया. बाबा जी मेरी फैक्ट्री आटा बनाने की, बहुत अच्छा आटा बनाता हूँ, क्वालिटी वाला. मैं पतंजलि का टैग लगा दूं. बाबा जी बोले बेटा लगा दे. और मेरे को क्या दे दे उसके ऊपर? बोलो क्या दे दे? बोलो कमीशन. एंड क्या है ये? दैट इज व्हाट? अ पेमेंट. पेटेंट. दैट इज व्हाट? पेटेंट. यू गॉट द पॉइंट? अभी एक बंदा आता है, बाबा जी क्रीम बनाता हूँ बढ़िया वाली. आई एम प्रिपेयरिंग अ क्रीम, गुड क्वालिटी क्रीम. सो आई वांट योर नेम. मेरे को आपका नेम चाहिए, पतंजलि. आई विल राइट द नेम ऑफ ऑन दैट. बाबा जी बोले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को क्या दे दो? कमीशन. यू गॉट द पॉइंट? दिस इज व्हाट? क्या चल रहा है? ऐसा नहीं कि बाबा जी खुद प्रोड्यूस कर रहे. देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर डूइंग द बिजनेस,
बस बाबा जी के पास गए, बाबा जी से ट्रेडमार्क लिया, पेटेंट लिया, और बाबा जी ने उसका क्या उठा लिया, कमीशन उठा लिया। एंड एवरीबडी नो, हाँ यस 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 यस, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रोसेस तो मतलब उनके स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। हाँ यू गॉट द पॉइंट, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। बाबा जी ऐसा नहीं है कि एरा गैरा कोई आ गया उसको बोल दिया बोले क्रीम बना लो, नहीं, वो उनका जो स्टैंडर्ड है, वट एवर द क्वालिटी दे हैव डिसाइडेड, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग दैट प्रोडक्ट शुड बी देयर। अदरवाइज इफ द प्रोडक्ट विल बी इंफीरियर क्वालिटी, अगर खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा और मार्केट में लॉन्च हो गया, तो बाबा जी का जो पतंजलि है ना वो गायब हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। So there is a बिल्कुल there is a standard, there is a quality standard which you have to maintain. If you are using the name of the Patanjali, you need to use a quality standard. You got the point? Any doubt? Clear हुआ? What you are saying is right. बिल्कुल सही बोल रहे हो. And what about goodwill? Goodwill is nothing but the name and fame of the business. If you are running your business in a positive manner, your goodwill will be on a positive basis. राज कुंद्रा, सबने देखा क्या हुआ? You got the point? ठीक है, क्या हुआ? गुडविल कहाँ गई? शिल्पा शेट्टी का क्या गुडविल था? ठीक है, and then what will happen to the शिल्पा शेट्टी? क्या हुआ? So if you are doing some negative things, the goodwill will decrease, and if you are doing all the positive things, the goodwill will increase. That is a goodwill. अच्छा करोगे गुडविल बढ़ेगा, बुरा करोगे गुडविल खराब हो जाएगा आपका। तो बिजनेस का जो गुडविल है, इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, द गुडविल विल इंक्रीज डे बाय डे। डे बाय डे बिजनेस का गुडविल क्या होगा? इंक्रीज होगा। लाइक विल टेक एन एग्जांपल ना, देयर आर टू ब्रदर्स, Mukesh Ambani, second one is Anil Ambani. At the time of जब उनका बंटवारा हुआ था, जब उनको बोला गया था both are getting same amount, same property, दोनों को इक्वल मिला था, नहीं मिला था? Yes, sir. तो आपके सामने सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बातें हो रही है। इट्स अराउंड 5 6 7 8 इयर्स बैक की बात कर रहा हूं मैं। दोनों को बराबर मिला। व्हाट अबाउट अनिल अंबानी, क्या हुआ उसका? बोलो। वो लॉस में है। लॉस में क्यों है? लॉस में वाई इज 40,000 करोड़ जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, ही इज इन अ लॉस। और इधर मुकेश अंबानी बोलो, प्रॉफिट में प्रॉफिट। हाँ, ही हैज पेड ऑल द लोन, जितना भी लोन है, एक लोन नहीं है इसका, सारे लोन ये पे कर चुका है। सो दिस इज व्हाट अ विजन सोच के आपकी। इधर मुकेश अंबानी का जो गुडविल है पॉजिटिव होता जा रहा है, इधर अनिल अंबानी का गुडविल क्या होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है। सो इट्स अ बिजनेस, व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस ना, always think positive, always think in a good way, then only the business will work. अगर आपका नेगेटिव सोच है ना, तो it will be a biggest problem in future में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। if you are thinking positive, the business will grow. if you are thinking negative na, it's a biggest problem. Okay, now say we'll start with the current asset. Everybody knows about current asset. What is current asset? Current assets are those assets which are converted into cash within 1 year. Okay, the first one is cash in hand. Everybody is having an idea now what is cash in hand. You are having cash in your pocket now. That is how much? That is 5 lakh. Example yaad hai na, 5 lakh rupees wala. Second one is what? Cash at bank. Bank balance. You are having a money in your bank. You can take out the money at any time. You can easily convert that money into cash within 1 year. Second one is, leave this word. I will discuss this word. I am concentrating on this word. What is this debtors? Any idea about sundry debtors? What is sundry debtors? What is sundry debtors? बताओ। सर जो सर रुपया देंगे सर कैश। बिल्कुल सही है। See, I have sold the goods on credit. मैंने उधार पे माल बेचा, and the person will pay the money in future. वो future में क्या देने वाला है मेरे को? पैसा देने वाला है. It becomes sundry debtors. You got the point? Like you will take an example. You are having, yes, you are having a shop of ready-made garment. ठीक है? Your best friend, आपका best friend है, he said that मेरे घर में marriage है, I have the marriage in my home and I want some clothes. वो आपके पास आता है और वो आपसे 2 लाख रुपीस की क्या ले गया? क्लोथ्स। किस पे ले गया? क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? व्हाट इज क्रेडिट? उधार पे ले गया। तो वो उधार पे आपसे 2 लाख रुपीस का माल लेके गया। एंड व्हाट ही सेड दैट आफ्टर मैरिज विद इन 3 मंथ्स आई विल पे द मनी। क्या बोला उसने? मैरिज के बाद में मैं 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा पे कर दूंगा। बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसी बातें करेगा तो ठीक है ना यार, कहां जाएगा पैसा? पैसा तो आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? व्हाट इज दिस? क्या बोलेंगे इस वर्ड को? क्या बोलेंगे इस वर्ड को? व्हाट इज दैट वर्ड? sundry debtors. Now you have to recover that money from that person.
आपको उससे पैसा लेना है तो आपके बिजनेस के लिए दैट पर्सन बिकम डेटर्स. He will pay you 2 lakh money in future and this amount become 2 lakh rupees. You got the point? Now see, after 3 months, he has not paid anything. 3 महीना पूरा हो गया, उसने कुछ भी पे नहीं किया. At the end you called her. आपने उसको क्या किया? At the end, हाँ वेट करो. At the end you call. उसको आपने कॉल किया, बोले तुम लेके गए थे ना वो 2 लाख रुपीस का प्रोडक्ट, तो उसका पेमेंट नहीं किया तो कब करोगे? तो पता है क्या बोलता है आपका बेस्ट फ्रेंड? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है पता है क्या बोलता है? वो कहता है हु आर यू, कौन सा पेमेंट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉपिक पे हूं? हु आर यू, कौन हो आप और किस पेमेंट की बात कर रहे हो? आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम यू. मैंने कब लिया आपसे? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया आपसे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज व्हाट अ सन्ड्री डेटर. सन्ड्री डेटर्स मींस यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन गुड फेथ. आप उधार पे माल बेचते हो, विश्वास पे बेचते हो. यू आर नॉट डन एनी रिटर्न एग्रीमेंट. आपने क्या उस फ्रेंड से कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया था? In that case, it is not possible to take that friend on court. Court तक नहीं जाएगा वो. It becomes sundry debtor. You got the point? Now the next word is yes. आपका जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एक हाँ, relationship में हो गया. You have not done any contract. You have sell the goods in a relationship. You have sell the goods in a good faith. You got the point? In that case, if you are taking this person on a court, is it possible to having a case on that person? क्या इसके ऊपर केस हो सकता है क्या? बोलो. If the case will be there, they will ask for the evidence. आपके पास क्या evidence है? बोलो. You got the point? Now, the next word is BR. BR and sundry debtor is one and the same thing. BR. The full form of BR is what? Bills receivable. Sundry debtor and BR is one and the same thing. दोनों एक ही चीज है. अब बच्चा बोलेगा what is BR? See, there is an unknown person. एक unknown person है जिसको आप जानते नहीं है. He said that I want the goods on credit. मेरे को उधार पे माल दे दो. What you have done? क्या बोला आपने? हाथ जोड़ के क्या बोला? क्या बोला आपने? Sir, we are not selling the goods on credit. If you want the goods, you have to pay the cash for that. आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? बोलो फटाफट बोलो. कैश देना पड़ेगा. ठीक है, उसने कन्विंस किया, फाइनली आप कन्विंस हो गए और आपने बोला ठीक है, आई विल गिव यू द गुड्स ऑन क्रेडिट. अननोन पर्सन कन्विंस हो गया, मतलब आप कन्विंस हो गए एंड यू आर रेडी टू गिव द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे देने को तैयार हो गए. बट व्हाट यू सेड कि विल प्रिपेयर अ प्रोमिसरी नोट, दैट इज नोन एज, एक स्टैम्प पेपर होगा, एक प्रोमिसरी नोट होगा, वो बनाएंगे. इफ यू आर रेडी फॉर दैट नोट, देन आई विल गिव यू द गुड्स ऑन क्रेडिट. दैट स्टैम्प पेपर इज नोन एज BR, बिल्स रिसीवेबल. क्या होगा उसमें लिखा हुआ कि इस पर्सन ने कितने रुपए के गुड्स लिए. ही विल पे द मनी व्हेन, कब पे करेगा. उसमें बायर का भी सिग्नेचर होगा, सेलर का भी सिग्नेचर होगा. एंड इट बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ऑफ 3 months. इफ विल नॉट पे द मनी, यू कैन टेक दैट पर्सन ऑन अ कोर्ट. अगर एग्रीमेंट है, आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, आपने लीगल एग्रीमेंट किया है, तो सामने वाला अपनी बात से पलट नहीं सकता. अगर पलटेगा तो अपन कहां लेके जा सकते हैं उसको? बोलो, कोर्ट तक लेके जा सकते हैं. एनी डाउट? क्लियर हुआ? यू गॉट द पॉइंट? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? बोलो, व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? बताओ, एनी आइडिया अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? छोटे टाइम के लिए हाँ, सी यू आर हैविंग 2 लाख रुपीज इन योर पॉकेट एंड यू नो दैट मनी इज एट योर होम, आपके घर पे पड़ा है. क्या काम आ रहा है? आपने उसे बैंक में जाके इसको FD करा दिया या सेविंग अकाउंट में रख दिया फॉर 3 months. This become a short term investment, means within 1 year you will convert that money into cash. उसको किस पे कन्वर्ट करेंगे आप? कैश पे कन्वर्ट करेंगे. You got the? हाँ, yes. इसमें मनी फ्लो मतलब प्रोग्रेस होता है. हाँ, the money will be converted into cash within 1 year. मतलब easily अपन कन्वर्ट करते हैं. And this is very important point. What is this? Closing stock. Any idea about closing stock? क्या है बताओ? What is closing stock? लास्ट स्टॉक ऑफ द ईयर. हाँ, last stock of the year is about ready-made garments. That is what closing stock. आपका टारगेट क्या होगा? You need to convert that stock into cash within 1 year. एक साल के अंदर किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आप? कैश में. That is what a stock. Done. See, those who are from non-commerce. See, there are some students who are from commerce background. They know each and everything. But those who are from non-commerce background ना, उनका आज बेसिक क्लास ले रहा हूँ. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद एडवांस वर्जन. यू गॉट द पॉइंट? कम से कम आपको ये क्लियर हो टर्मोलॉजी क्या है. इफ यू डोंट नो द टर्मोलॉजी, इट इज नॉट पॉसिबल टू
attend the basic classes ना, आगे का advanced classes में problem आएगा. Okay, now see, we'll start with the current. Yes, Tapas. So closing stock only for end of year or? End of year. See, whatever the money, whatever the stock you have sell, that become cash balance. Like if we take an example, you are having a stock of 5 lakh. ध्यान है भी, Tapas, we have done one question. How much stock we are having of that ready-made garment? 5 lakh. Out of 5 lakh, I have sold the stock of 3 lakh rupees. So what this 3 lakh rupees become? If you are selling the stock, what you will get? Suppose if you will sell the stock of 3 lakh rupees, what it become? It become cash. So that is what 3 lakh rupees. So how much stock is remaining? 2 lakh. That become cash balance. You got the point now? That is become closing stock. And Monthly or only yearly? See, this balance sheet will be prepared on 31st March in India. Okay, yeah. You are preparing the balance sheet. If you are preparing this balance sheet outside India, na, it's of what? On 31st December. See, Tapas is doing BBA. He's doing BBA from which university, Tapas? Yeah, People Business School, Paris. Paris. He is doing BBA from Paris, and he is taking classes. Okay. Any doubt? Any doubt to anybody in current assets, in fixed asset? Any doubt to anybody? Clear है यहाँ तक? हो गया? Okay. Now we'll start with the current liability. What is current liability? अभी बताया था मैंने. What is current liability? What is current liability? The current liability is that liability which we will pay within 1 year. I have taken money from somebody, I have to pay that money back in 1 year. If I am paying that money within 1 year, it becomes current liability. You got the point? If you are paying that money within 1 year, it becomes current liability. And if you take more than 1 year to pay the money, अगर मैंने किसी से पैसा लिया है और 1 साल से ज्यादा लगा दिया उसको पैसा देने में, तो क्या बन जाएगा? बोलो, क्या बनेगा वो? That become more than 1 year. It become fixed liability. You got the point? Liability means I have taken something from somebody. Liability का मतलब मैंने किसी से कुछ ले रखा है और मेरे को उसको वापस क्या करना है? अच्छा, एक एग्जांपल बता दो, बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हंसी भी आएगा आपको. सी देयर आर 2 पर्सन. एक होती है वाइफ. वैसे तो आप लोग की शादी नहीं हुई, होने वाली है. वैसे तो एक वाइफ होगा, ठीक है, और एक होती है सिस्टर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड सिस्टर? क्या डिफरेंस है बताओ? हाँ, वाइफ क्या है? वाइफ आपकी कौन सी एसेट है? बोलो, कौन सी एसेट है ये? फिक्स एसेट है. कब तक रहेगी आपके साथ? लाइफ टाइम रहेगी नहीं रहेगी? व्हाट अबाउट सिस्टर? सिस्टर क्या आपकी लाइबिलिटी है. क्यों है लाइबिलिटी? बिकॉज यू हैव टू, आपके पास वो, आपको उसको किसी और को देना पड़ेगा. दैट इज व्हाट लाइबिलिटी. यू गॉट द पॉइंट ना? चलो करें, स्टार्ट करें. ओके, नाउ we'll start with the current liability. In the current liability, we are starting with the first point, that is sundry creditor. What is a sundry creditor? बताओ. Any idea about sundry creditor? Payment of हाँ, purchase. Payment of purchase of stock. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. What you are saying is right. We'll take the example of sundry creditor. See, if you are purchasing something on credit, अगर मैंने उधार पे कुछ खरीदा है, तो I have to pay. It becomes sundry creditor. अगर मैंने उधार पे कुछ बेचा है, if I sell the goods on credit, I will get the money. It becomes sundry debtor. So the opposite of sundry debtor is what? Sundry creditor. You got the point? See, the person knows me. पता है आपको? He knows me. He has not done any written agreement. He has given the goods on credit. वो मेरे को जानता था, उसने मेरे को उधार पे माल दे दिया, कुछ नहीं बोला वो मेरे को, और कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया. क्या बन गया बोलो? सन्ड्री क्रेडिटर. यू गॉट द पॉइंट? आपने अपने फ्रेंड को उधार पे माल बेचा, यू विल रिसीव द मनी, सन्ड्री डेटर्स, विदाउट एनी एग्रीमेंट. इन दैट केस सन्ड्री क्रेडिटर, यू हैव टेकन द मनी, टेकन सम गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने किसी से उधार पे माल लाया, जानकार है वो आपका, यू नो देम, he is not done any agreement, it becomes sundry creditor. You got the point? Now the next point. What is the next point? Bills receivable. Everybody knows about bills receivable. क्या था बताओ? What is bills receivable? What is the difference between sundry debtor and bills receivable? क्या था bills receivable बताओ? You are having a written agreement. यहाँ पे agreement था. You are selling the goods on credit with a written agreement. It becomes bills receivable. So opposite of bills receivable is what? क्या होगा बोलो बोलो? Bills payable. You got the point? You are purchasing the goods from somebody.
एक अननोन पर्सन से आप माल खरीदते हो, वो कहते हैं सर आई विल गिव यू ऑन क्रेडिट, मैं उधार पे दूंगा, बट with what written agreement, it become bills payable. You got the point? Clear है? Anybody is having any doubt? Clear हुआ? Clear है? Okay. What about this bank overdraft? Any idea? There are some commerce students are there, they know. Short-term facility provided by the bank. हाँ, short term loans the bank will provide you. Write one word on bank overdraft. It is also known as credit card. You can write credit card on bank overdraft. Like if you take an example, you are having a credit card and having a limit of 1 lakh rupees. तो आप 1 lakh rupees की shopping करो. You don't need to pay anything for that. But within 45 days, you have to pay the money to the bank. It means you have to pay this money within 1 year. एक साल में आप पे करने वाले हैं. It become what? Current liability. Any doubt to anybody? Clear हुआ? Sir, Yes, Tapas, yes. can you repeat again, sir? One sundry creditor. Sundry creditor, na Tapas. See, we'll take an example. One of the shop you know that person very well, and you have purchased some goods of rupees 50,000 on credit from that person. You got the point? Yes, sir. See, Tapas, one of your uncle, he is having a shop of ready-made garment. You have purchased a goods of 50,000 from your uncle. So, is the uncle will have you a written agreement? You will prepare a written agreement in front of uncle? No, na? No. So, in the because he knows me, and you knows him, na? In that case, what will happen? क्या होगा तपस बोलो? What will happen in that case? See, you are purchasing the goods of 50,000 on credit. You will pay the money within 2-3 months. Okay, 2-3 months, like if you short term, like short term, na? See, and there is no written agreement between you and your uncle. You got the point? Yeah. So, if you will not pay after 3 months, what will happen? Is the uncle will take you on a court? See, big problem. See, big problem. What big problem? If you say that I will not pay the money, is it possible for the uncle to take you on a court? In court? No, there is evidence, yeah. Because there is no evidence. There is no written agreement is there. So now the second word is bills payable. What is this bills payable? Tapas, what is this bills payable? Bills payable means that if there is agreement. If there is agreement, see, I don't know that person. I don't know that uncle. And uncle said that I will give you the goods on credit, but there should be a written agreement. मैं उधार पे दूंगा, but written agreement करूंगा. क्या it become bills payable? In that case, if there is any defaulter, that person will take you on a court. Court तक लेके जा सकते हैं. You got the point? Okay, now. Thank you, sir. Now leave this word outstanding expenses. Leave this word unearned income. Leave these two words because we'll discuss these two words when we prepare the final accounts. See, within 2-3 days we'll come on the trading account, balance sheet, and profit and loss account. That is what a final account. That is a basic part of accounts. We'll discuss this thing. And now we'll start with the fixed asset. What is fixed asset? What is fixed asset? Any idea about fixed asset? 5 minutes. 5 minutes. Any idea about fixed asset? Last time you Fixed asset means that I have to pay that money back within more than 1 year. If I will pay that money within 1 year, it becomes current asset. If I will take more than 1 year to repay that money, it becomes fixed asset. Now there is one word, that is long term loan. What is long term loan? What is long term loan? I have taken a loan from a bank and I will pay that money to the bank, but it will take minimum 10 years, 20 years, 30 years. It becomes long term loan. What is the next word? That is capital. Capital is that money which is invested by the owner in the business. And leave these points. We'll discuss these points in detail when we'll complete this final account. So I think you got the basic terminology. कुछ clear हुआ? You got the basic terminology. What is asset? What is current asset? What is liability? What is current liability? What is fixed liability? What is fixed asset? You got the point now? Clear है? Okay, now see in the next class what we'll do. क्या करने वाले हैं अपन? See, read this terminology. I will send you this PDF. मैं आपको पूरा PDF का भेजने वाला हूँ आप लोगों को WhatsApp पे. So read these words. Page number है. The page number is 1.12. One word is what? Asset. Asset is divided in fixed asset, current asset, debtors, stock, types of stock. You got the point?
liabilities there, long term liability, current liability, creditors, capital, goods, purchase, sale. See, these are what are basic terminology. Those who are from non-commerce background, please read this terminology, because अगर इनको read करोगे ना तो get an idea, basic idea लगेगा, and then we'll start with the class in a proper manner. So complete this terminology, or see in the next class what we'll do. In the next class, we'll start with the basic part of journal. See, I will start the basic journal entries in a systematic manner. आपको एक एक journal entry का concept clear होगा, and I will do these things on my concept. मेरे concept पे चलता है, and I will complete this topic in the next class. So please, chapter 1 में what you need to do, you need to read all these things. In chapter 1, what you need to do, you need to read all these things. This is on page number 1.14. So page number, that is 1.12. 1.12 to page number 1.14. Read all these things. And the next class will start with the main part of this particular subject, that is journal. Journal is nothing but the journal entries which we made for a business, for the transaction. अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें जो एंट्रीज आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन जर्नल बोलते हैं. करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं. एनी डाउट टू एनीबॉडी, बोलो. आयुष, फैजल, आयुष, एनी डाउट? कुछ क्लियर हुआ? ओके. फैजल, फैजल, ओके. सपम, यस सर. कोई डाउट है? नो सर. नो. शुभम, हाँ. यस फैजल, यस फैजल, नो डाउट. ओके. शुभम, शुभम, एनी डाउट? No, sir. नो. देवांशु, कंफर्टेबल हो? यस सर. ओके. दिव्या, दिव्या, you are from Bangalore University, na? Yes, sir. See, is there is any communication problem is going on, or you are understanding each and everything? No, sir. I can understand your words. You are not understanding my language. I can understand your language. Okay, okay. You are understanding my language. Ah, okay, 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 okay. Yes, And sir. Ankit, Ankit, please just एक बार mic on करें. Okay, अनिकेत, शॉर्ट दिख नहीं रहा. अनिकेत, Yes, sir. समझ में आ रहा है सारा? सिद्धि, Yes, sir. सिद्धि, एवरीथिंग इज फाइन ना? पक्का पक्का, चलो ठीक है. मोहित, नो सर. नो सर. कंफर्टेबल. ओके. सिमरन, यस सर. सिमरन, तुम्हारा थोड़ा मन Yes, खराब sir. था. अच्छा, पहले तो ये बताओ, आज मन खराब है कि मन अच्छा है, ये बताओ तुम, बाकी छोड़ो. हाँ सिमरन, ठीक है. ठीक है ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो. सिमरन, इफ यू टेक द क्लास ऑफ 1 वीक ना, 1 वीक बाद में ना, पता है आप क्या बोलोगे कि मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ. तुम्हारा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है ना सिमरन? Yes, sir. हाँ, आएगा. देखो सिमरन, छोटी छोटी चीजें मैं एक एक करके कनेक्ट करूंगा और एक एक चीज क्लियर होगी ना. टेंशन मत लेना. तुम अभी मेरे साथ 1 वीक रुको, 1 वीक में तुमको क्लियर हो जाएगा सारा चीज. ठीक है? सर, मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है सर. अच्छा, कॉमर्स है, फिर क्यों टेंशन लेते हो? एक सर, एक. मैं सुबोध कॉलेज से बीबीए किया था. आपसे क्लासेस ली थी. सुबोध कॉलेज से हैव डन बीबीए. ओके. फिर वो सिमरन कौन है? एकेटीयू वाली कौन, कहाँ गई वो? सुमन खुराना, कॉम्पी सर. ओके, कॉम्प्यूकॉम. ओके 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 ओके. सिमरन, एक गर्ल थी फ्रॉम एकेटीयू, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. वो कहाँ है? वो शायद इसमें है नहीं लगता है. वो बड़ी टेंशन में है. ओके. हु इज दिस? तपस ना? Yeah, sir, I have, sir, will today's video will be available in the हाँ, see, you will get all the videos. Whatever the classes I am taking, I will upload all those classes and I will give you the link for that particular class. You can download the class and you can run that class at any time. Okay? ये सारा क्लास अपलोड होगा. Don't worry, you will get all these videos. ना? Don't worry. Okay? So we'll meet